हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल सचिन्स फूड टूर। होप आपने मेरा थाईलैंड के सारे वीडियोस देख लिए होंगे अब तक। अगर किसी ने नहीं देखे हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और सारे थाईलैंड के वीडियोस देखिए। और आज हम आए हैं पुणे। आज हम जाएंगे अहिल्या देवीस थाली। वहाँ पे सिकंदरी रान फेमस है और महाराजा थाली जिसमें ऑल सिग्नेचर डिशेस वो सर्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। थैंक यू। गाइस अभी हम जा रहे हैं कात्रज की तरफ, बिकॉज अहिल्या देवी थाली कात्रज के पास है। अगर आपको यहाँ पहुँचना है सो इट्स जस्ट 1.5 किलोमीटर फ्रॉम कात्रज चौक। सो जिन लोगों को मटन रान पता नहीं क्या होता है, मटन रान बेसिकली लैम का लेग होता है और वो बहुत काफ़ी बड़ा होता है। सो इट्स लाइक 1.5 किलो से ज़्यादा ही होता है वो। और उसे मैरिनेट करके इंडियन स्पाइसेस में और वट एवर लाइक तंदूरी स्पाइस और बोलिए या जो भी है उसको ग्रिल या रोस्ट किया जाता है फॉर 3 आवर्स। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन किचन है इनका। स्टाफ बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही हेल्पफुल है। मैनेजर ने हम लोगों को और ओनर ने हम लोगों को परमिशन दिया है अंदर शूट करने का, तो काफ़ी हाइजीनिक और काफ़ी अच्छे तरीके से खाना पकाते हैं लोग यहाँ पे। मटन रान का प्रिपरेशन के लिए रेडी है। हम लोगों ने मैरिनेट किया हुआ है मटन रान और अभी हम लोग यहाँ पे उसे ग्रिल करेंगे। ये कितना टाइम लगता है ये ग्रिल प्रोसेस में? 3 घंटा। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे जो ये मटन रान जो ये सर्व करते हैं, ये लैम जो है ये आता है कर्नाटक बॉर्डर और महाराष्ट्र के बॉर्डर के आसपास के रीजन से, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट मीट इन इंडिया।
गाइस आप देख सकते हो ये कितना जूसी, कितना टेंडर मीट है। ये बहुत अच्छे से पका हुआ है। इसको 3 घंटे के लिए ग्रिल किया गया था। सो यू कैन सी हाउ सॉफ्ट एंड इट इज़ फॉलिंग ऑफ द बोन, यू कैन सी दैट। वाओ, अमेजिंग। बहुत ही मज़ा आने वाला है खाने में ये। ये मीट बहुत ही टेंडर मीट है। लुक एट द फ्लैश गाइस। ओह अमेजिंग गाइस, इट्स मेल्टिंग इन माई माउथ। अगर आपको रान खाना है पुणे में, अहिल्या देवीज इज़ द प्लेस, ज़रूर आइएगा। ग्रेवी टेस्ट करते, ग्रेवी कैसा है इनका देखते हैं। वाओ, काफ़ी नाइसली होमली मेड स्पाइसेस। ओह सुपर। ये लोग पाइनएप्पल देते हैं, ग्रिल्ड पाइनएप्पल इसके साथ। काफ़ी स्वीट। इसको जो ग्रिल किया गया है आयरन इस पर, और ये पूरा खाना देखो जो बनाते हैं चूल्हे पे बनाते हैं, तो इसका टेस्ट ही कुछ अलग ही होता है। हेलो, हाय कुणाल। सो हाय कुणाल, दिस सचिन फ्रॉम सचिन फूड टूर। बहुत अच्छा लगा आपके होटल में आके। यहाँ पे खाना भी बहुत ही अच्छा था। रान स्पेशली, रान तो बहुत ही जूसी टेंडर, और जो आप मीट जो सर्व करते हो वो काफ़ी डिलीशियस था, बहुत ही अच्छा था। तो आपका ये अहिल्या देवी मीट शॉप तो बहुत फेमस है धनकवडी में। 1980s, या आई नो। और आप कैसे फिर रेस्टोरेंट बिजनेस में आपका प्लान कैसा हुआ? एक्चुअली जो हमारा प्रोसेस था, एक्चुअली जो हमको मीट जो पूना में मिलता है, दैट इज़ नॉट लाइक how people should know meat. People only know meat like how they eat it at home, but we trying to serve meat in a different way by cooking it in different styles. Like what is the basic, like how in the villages they used to cook it on wood fire, so we getting that trend back and grilling most of our items. It's not, the place is not only about thali, but it's more about like the meat, like Right. we want to promote the meat that we are selling. Of course, Yeah. yes, of course. And I've heard you get this meat from the border of Karnataka and Maharashtra. It's a breed called Madgal. Madgal, Yeah. okay. So that is the breed that we are using. Okay. So it is the basic thing is that the specific breed that we use, it grows in a very quicker time. Okay. So and the meat of it is very tender. Tender, yeah. So that's the difference between other meat and this the meat that we use. Okay, and what is your future plans for this hotel? For this, we are trying to open up one more place One more place, okay. in Camp, Camp, next to okay. Shanghai. Okay. And we are coming up with specially only meat grilled items, Oh, wow. plateau, Wow. by the name Cafe Plateau. Wow. So out there we'll be selling like more meat kind of Okay. products. Okay, great, sure. So we'll definitely try that as well. Sure. Definitely in future. So thank you so much for giving me access to everything, and also it was really great. Thank you. And guys, जो आपकी अगर मटन रन या बहुत सारे मटन डिशेस आपको ट्राई करने हैं तो अहिल्या देवी यही जगह है पुणे के लिए जो सबसे फेमस है, और बहुत ही जूसी टेंडर मीट आपको मिलेगा खाने के लिए। तो ज़रूर आइएगा। कातरा चौक से हार्डली 1-1.5 किलोमीटर पे ही है ये। थैंक यू। Thank you. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। जो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ प्रेस लाइक, कमेंट एंड शेयर। टिल देन एन्जॉय लाइफ एंड स्टे सेफ। बाय।